राज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। जल प्रवाह भावितस्थले गलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका मद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वय चकार चन्दताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जतागताः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्बनिर्जलि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपद्मपावति किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिशनम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव 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 महादेव देव महादेव देव
वशे तस्य स्थिरं रक्तगजेन्द्र तुरागयुजम्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णावपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पृथिवी शान्ति अंतरिक्ष शान्ति सर्वं शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का the 107 Q&A session. So we are just about to finish the mala in one more Q&A. So could not have been possible without you all. So thank you for your questions. I don't know whether it is a compliment or some other thing, but good, we are still continuing. And we will until you realize. And let's begin. So Hari bhai, we already have hands raised, so good to start. Yes, Nancy. Pranam Vijay ji. Revati ji, please unmute yourself. Pranam Mahadev. I have Pranam. a very small question. This so we have been from childhood, we have been listening to Vishnu Sahasranam. You know, it's used to play in our houses in the south. It's always there. What is this? Of late, I've been hearing people telling me about Lalita Sahasranam. Sahasranamam. What is that? So
What is that? I mean, I don't want Google. I mean, I can get Google information, but I don't Google information about all this. Okay. So Lalita Sahasranamam is nothing but again like जो श्री यंत्र की पूजा करते हैं, all these people those who do the पूजा of श्री यंत्र, उस समय पे ये ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम जो है उसको गाया जाता है और हर एक विधि के साथ जो चक्र होता है, जो श्री चक्र है, उसके ऊपर एक एक जगह पे आपको वो पूजन की, जैसे हम माला करने के टाइम पे मैंने कहा ना कि लाइक यू हैव टू टच वन बीड, इन दैट वे हर एक वो यंत्र में हर एक देवी देवता का स्थान है. So by chanting that Lalita Sahasranam, at the same time you do the puja along with it. So that is what it is all about. It's a Supposed to good thing. Very It's really- powerful, it's a very powerful this thing. Everything is powerful. If done Everything with is bhakti, I think everything is. So Absolutely. So it all depends, like आपकी आस्था किसमें जागती है. So that is all about. So if And secondly, this Mahamrityunjay Jap, I remember, so when my husband was sick and in a coma and all that, so there used to be this collective Mahamrityunjay Jap used to be done by various people across locations, they used to do it. Is Mahamrityunjay Jap done only? So it's obviously the Mrityunjay Jap, I understand that, but I also see people doing that even at the beginning of some puja or something. So it's nothing to do with somebody's sick, somebody's life to be saved. Is it anything like that? now, one thing that is you have to understand is Mahamrityunjay Jap generally is लोगों को वही समझ में आता है, like they think like when somebody is sick or on the deathbed they can chant this Mahamrityunjay Jap. But why should you be waiting until you reach to the door and then you start chanting? I think like if you chant it ahead, I think you will be much more prepared. और वैसे भी सारे चीजों के पीछे क्या है, like all that is there, all that you have to realize is, are you really someone whom death can touch? If that is something that until and unless you have that recognition of that part, till then. But at the same time, I see like whenever I listen or I chant or whenever I see people doing that, I think like, wow, so this is just a reminder. I am actually Mahamrityunjay, means I am beyond death anyways. So as I was saying on this Sunday morning, right? So when that time arrives and when you realize that part, that time you will be so amazed, like, wow, so my preparation has been done. It does not matter anyways. लेकिन हाँ, महामृत्युंजय कहाँ कार्यरत होता है, like generally when it is given, like especially when the yogis do that. Okay. So because they think like their sadhana will be taking a longer time, in such cases, if they foresee their death, means let's say I have to complete my sadhana in the next 2 years, but I foresee that I'm going to die in the next 8 months. So in such cases also they provoke this mantra. Means invoking this mantra and then doing that mantra is something that they also do in order to gain that vitality, gain that time length period or that extra time that you can say of, so that they can complete their the sadhana that they are doing. Even that is done in that way. And in case of Markandeya Rishi, like who was the author of that, like who created this mantra, we all know his stories anyways. So Mahamrityunjay can be done by anyone. But whenever you are doing, instead of just thinking like I will be saved from death, I literally want you to realize that you are beyond death anyways. So that should be a reminder rather than just be a chanting. But yes, you can do it for others. Now you see, when somebody realizes that they are beyond death, and when they do it for others, it works in a much better way. Surely you can do. So there is nothing like it is only should be done at the end of the days. You can do it. And one more thing, finally, Mahamrityunjay, right?
Can't you see, like, it is also talking about that you will not take again and again, like from that cycle of again and coming, going. It can liberate you from that also. The one who has won over death, will he come ever again? He won't. So good to go with that. Yeah. So your next one, please. Pranam Mahadev. Thank you. Thank you so much, Revati ji. जी सुधा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सुधा जी, आपने 5 मिनट मांगा था, तो अभी से शुरू करें क्या? नहीं, वो प्राइवेट है 5 मिनट. ओके, ठीक है. गुरुदेव, मैं थोड़ा ये जानना चाहती हूँ ना, ये जो समाधि फेल होती है इसका क्या मतलब है और वो कैसे बचा जा सकता है, क्या मतलब है, ये इसका थोड़ा सा कुछ जानना चाहती हूँ. ओके. Samadhi and why it fails. There are a few factors there, Sudha ji. एक होता है कि आपके karmic things. If you have not realized again, like you have completely not realized yourself, तो आप अभी भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हो. लेकिन एक चीज इसमें समझने वाली बात यह है कि आप माया में हो या महामाया में. ओके. So if you get this answer, you will be clear समाधि फेल क्यों होती है. What is the difference between Maya and Mahamaya? You have to understand that. हम जो सांसारिक लोग हैं, हम क्या हैं? हम माया में फंसे हुए हैं. यही कहते हैं ना हम लोग. So this is what we all speak of, that we are all in Maya. Now, हमने कृष्ण की इतनी सारी चीजें, लीलाएं देखी है. कृष्ण को भी हम अगर देखते हैं तो वो भी जब यशोदा उसको बांध देती है रस्सी में, वो बंधे नहीं बंधे, लेकिन उन्हें कोई बांध सकता है क्या? नहीं है. तो हम जिस जगह पे बंधे हुए हैं वो माया से बंधे हुए हैं, बिकॉज वी आर बाउंड बाय टाइम, स्पेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस. हम कार्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं, तो ये माया के अनुकूल आता है. तो इसी प्रकार से जब भी कोई भी माया के अनुरूप में चलता है, मीन्स दे हैव नॉट ट्रांसेंडेड माया, माया के परे जाके उसको समझने की कोशिश नहीं किया, तो वो इस सारे चीजों में बंधा रहेगा. एक कारण होता है कार्मिक अकाउंट, जिसके वजह से, उनका कर्म के वजह से वो फिर से वापस वो टूटता है, सो दैट दे विल बिगिन इट अगेन. लेकिन वन गुड थिंग अबाउट दैट, दे डोंट हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे स्टार्ट इट फ्रॉम वेयर दे हैव लेफ्ट. ये एक चीज होता है. दूसरा चीज होता है गाइडेंस. गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन. ऐसा हो सकता है कि लेट्स से आप स्कूल में पढ़ रहे थे, सो I am capable enough to take you till 10th class. But post that, अगर आपको IAS की तैयारी करनी है, अगर आप मेरे पास ही आप रह गए, करा पाऊंगा आपको? I was a guidance for you till that time, but beyond that, so उन्होंने वो सीकिंग नहीं की. तीसरा, मैं जानता हूं, मुझे पता है, I don't need anything anymore. मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं. हम वहां पे टूटता है. आप बोलोगे क्या वहां तक पहुंचने के बाद भी हम आता है? वहां पहुंचने के बाद ज्यादा हम आ जाता है, क्योंकि दैट इज, इट इज लाइक, आप बताओ, जब आप एग्जाम्स लिखे होंगे तो कई तरीके के, आजकल तो हम देख रहे हैं कई तरीके के एग्जाम्स कर रहे हैं बच्चों के स्कूल्स में, लाइक रिटन टेस्ट, पेपर टेस्ट, पेंसिल टेस्ट, rubber test, I don't know what all names they have given to that. Then they say class test, then they say monthly test, then they say quarterly test, then they say half yearly test. I don't know, like Iman's school started 2 days ago and he has already given a test, so I don't know how come. So but if you see the intensity of the questions, सबसे ज्यादा कब आता है? जब फाइनल एग्जाम्स है कि नहीं? और जितना बड़ा एग्जाम उतना बड़ा ओहदा, you will be going to the same kind of things. So यहाँ पे क्या हो जाता है, इसी जगह पे फंसने के लिए, यहाँ पे आपको, जैसे आप रामकृष्ण परमहंस का याद करो आप, he was one person जिसको पहले देवी का दर्शन हुआ, बाद में गुरु मिला. Yes or no? So it is a very typical case. उसको गुरु की क्या जरूरत है? उसको तो मां सामने थी, लेकिन वो इल्यूजन से बाहर नहीं आ सकते थे. So in order to cut that illusion, अगर वो नहीं होता तो रामकृष्ण परमहंस again he must have taken birth. तो यहाँ पे तोतापुरी का क्या काम रहा? He came that you have already been enlightened, you have already seen goddess, she is talking to you, she is speaking to you, you are feeding her. इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए. लेकिन
you are crying. मतलब वो सामने नहीं है तो रोने लगता है. That means you are bound to one structure, one figure, one shape, but you are not that. क्यों तू अभी साकार में रुका हुआ है? तो निराकार को जानना. तो जब तक ये भी ट्रांजिशन नहीं होता, till that time also there is a thing that you can get hold of. चौथा, when I am getting all this, जब भी आपको ये सारे चीजें होंगी, मीन समाधि में आप जैसे जैसे जाओगे, whenever you are entering into samadhi, at the same time there will be other things that will happen to you, like you start gaining power. Those are side effects. लेकिन लोग उसको मेन इफेक्ट समझते हैं. So side effects क्या हो गया? You will start gaining powers in your hand. और अगर पावर में रह गए तो अरे I want more, I want more, I want more. So I was just talking with Haribhai on holy day. होली के दिन में मैं बात कर रहा था, जो होलिका का दहन हुआ जो पिछले रात को. So I was telling him, लेकिन आपके लिए तो वो जनरली एक होलिका का दहन होता है, लेकिन ये एक ऐसी रात्रि होती है जहां पे जितने लोगों ने ये सारे सीखे हुए हैं वो प्रयोग करके देखते हैं कि कौन कितना सीखा है. और वहां पे जैसे आप देखे होंगे ना, लाइक फायरवर्क्स, देयर इज ए competition of people, those who fire up the fireworks and variety of things आते हैं, वहां पे भी वैसे ही दिखाई देता है. So what is the problem there? The problem there is they are still stuck to that power, game of power, game of wealth. मतलब माया में आ गए ना फिर से. अब महामाया क्या है देखो. माया में हम भी फंसे हुए, हम सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर सुबह सुबह उठते ही अगर पैर में दर्द है, आज पूजा नहीं हो पाएगी, पैर में दर्द है. So क्या हो गया? ये माया में है कि नहीं है? बट इफ यू रियलाइज, आई डोंट से लाइक अगर योर पेन है तो आपको जाके करो. नो, व्हाट आई एम सेइंग इज, are you able to see that pain was given to you to realize that this body that I think myself is also giving me pain. लेकिन ये पेन इसमें 2 दिन पहले नहीं था, और जब ये शरीर नहीं रहेगा ये पेन रहेगा क्या? नहीं रहेगा. और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था सुधा जी, लाइक व्हेन द पेन इज कमिंग टू मी, दैट मेक्स मी और हेल्प्स मी टू कम क्लोजर टू माय लिबरेशन. क्यों? क्योंकि वो मुझे जताना चाहता है कि देख, तू जिसको अपना मानता है, जिसको इतना सजा रहा है, देख इसमें क्या क्या है. सो लेकिन फिर भी हम माया में बंधे हुए हैं. उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे देख लिया, उसने उसको. सो दिस इज अगेन रोटेटिंग इन दैट माया. उसने मेरा ये ले लिया, मैंने उसका वो ले लिया. सो दिस इज वे आर गोइंग माया. लेकिन महामाया को देखो अब कैसे. व्हाट शुड बी ए स्टेट ऑफ ए साधक. आप लोगों की साधना में क्यों कैसे नहीं रुकोगे वो बताना चाहता हूं. व्हाट विल नॉट ब्रेक योर समाधि, ये जानना जरूरी है. जैसे मैंने कहा कि जब कृष्ण आके लीला करे तो उनको भी बांधा गया, उनको भी मां ने पीटा नहीं पीटा है. अब बताओ, हु इज एवरीथिंग, ही इज बीइंग टाइड. हु इज एवरीथिंग, ही इज बीइंग बिटन. और वो रोए भी. ही डिड ऑल दैट ड्रामा, यस और नो. वो रोना भी किए और माँ को हाथ जोड़ के भी बोले मेरा रस्सी खोल दो, मतलब सच में जैसे बांध के रख दिया किसी ने उसे. जब भी भगवान कोई भी लीला करता है ना, वो माया में नहीं करता है, वो महामाया में करता है. अच्छा, ये माया और महामाया का डिफरेंस क्या है? माया में क्या होता है, विच इज यू कैन एक्सपेक्ट दिस इज गोइंग टू हैपन. ये हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ, there is a certain circumstance that will happen. महामाया में क्या होता है, जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, वो महामाया है. कृष्ण बांधे नहीं जा सकते, बंध गया, महामाया है. Now you have to realize, are you tied by Maya or you have transcended that? कैसे? अब देखना कि मुझे तो लगता है कि ये शरीर टूट रहा है, ये शरीर बिखर रहा है, ये शरीर में ये है, ये शरीर में वो है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, am I able to recognize that now? क्या मैं जान पा रहा हूं कि ये हो रहा है? If you are able to see that, क्या हो गया? You are on the brink. मतलब आप वो दोनों के बीच में आ गए हो. At least you are now able to see that कि ऐसा हो रहा है. तब क्या कर सकते हो? Then if you transcend beyond that, कैसे ट्रांसेंडेंस आता है? Now, इसके लिए बहुत ही सरल और एक अद्भुत चीज बताना चाहूंगा. अगर आपको अभी कर सको तो आपको अभी समझ में आ जाएगा. Take everybody, take your both hands like this, open up like this, just in front of you. सामने रखो दोनों हाथ.
एक अद्भुत घटना घटेगी अगर आपने सच में किया ना. यू विल रियलाइज एंड एक्सपीरियंस व्हाट इज बियॉन्ड माया राइट नाउ. आर यू रेडी? अगर आपकी तैयारी है, जरा सी भी तैयारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने चाहता हूं. एंड यू विल एक्सपीरियंस इट राइट नाउ. वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनी टाइम टू कम. ये हाथ को जोड़ के रखो ऐसे सामने. नाउ ऑल दैट यू हैव टू डू इज, ये जोड़ के बस इसको ऐसे खोलना है. दिस मच इज द प्रोसेस. अब हाथ नीचे करो, उसके बाद बता देता हूं, उसके बाद बोलोगी इससे क्या हो सकता है. व्हाट कैन हैपन जस्ट बाय डूइंग लाइक दिस. I will show you what can happen by just doing like this if you have prepared it. And if I am saying, you will experience it right now. Tayyar, everyone? Now listen to this. पहले सुन लो, उसके बाद कर लेना और अभी करके देखेंगे. So that you catch hold of me right now कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है कि गलत है. ठीक है? When you are doing this, आज तक, for till this state, you are doing what? You're just moving your hand, right? But today you are not going to move your hand. If I say that this is the veil of Maya, agar ye Maya ka parda hai, and now I am removing that, and you look at one particular thing, सामने जो कुछ भी दिखे एक पर्टिकुलर थिंग को देखो और मुझे बोलो आपके अंदर क्या हो रहा है. You will feel something which I will tell you after you do that, because I know what is going to happen to you. Immediately, right now when you are opening your hands just like this, you will see something opening up in your heart. Right now, try. You don't even have to close your eyes, you can open your eyes. Now tell me, how are you feeling just by doing this? Feel your heart right now. How does it feel? Is it not opening up? And now hold that. I'm not done yet. यहां रखो. जितना देर हाथ ऐसे रखोगे ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा. And you are so amazed like how this is possible. How can it? ऐसा नहीं लगा किसी ने आपका हृदय का द्वार खोल दिया है? How is it possible? Tell me. And now if you keep it like this and you look at one particular object, देखो आपके सामने जो कुछ भी चीज है उसको एक क्षण के लिए देखो. Now what you have to do, you know, ये पर्दा जो है ना, मैं पर्दा फाड़ के आगे जा रहा हूं. I will break that and I will pierce through that Maya into Mahamaya. Do that. Whatever wall भी है ना आपके सामने, उसे भी देखो. अगर आपको ऐसा नहीं लगा ना, it will just pierce through and it will take you like this. It will feel like a rubber band, as if it is stretching away. Now tell me if you are experiencing it or not, and tell me now. ना इसे समाधि में कैसे जाते हैं? आप ये कहते हो मेडिटेशन कैसे होता है? आप कहते हो मन को कैसे शांत करते हैं? ऐसे कर सकते हैं. Now what is that feeling within you now? Just like this. This is what it is. And how many of you realize that vibration in your heart, in that area of that heart chakra, वो कैसे vibrate हो रहा है अभी? And this is how you should be feeling, right? मैं कहता हूं, अगर जिसको ये यहां पे अगर मैं बैठ के ये कर सकता हूं ना, तो आप अभी समझना चाहिए कि क्या आप माया में रहोगे कि तोड़ के चले जाओगे. How much time does it take? तो सुधा जी, क्या देखे आप, अगर आप यही करके रहोगे, यू जस्ट ओपन लाइक दिस एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट समथिंग, जैसे जैसे देखते जाओगे ना, मतलब ये कपड़ा है ना, ये कपड़े के अंदर से जैसे ये उंगली चला जाता है ना, ऐसे करके जाएगा वो. And you think you don't have powers. You think you have not done anything. No. We have not been joking around all these years. आपकी तैयारी कैसी है आपको पता भी नहीं है. पता तो तब चलेगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी. So सुधा जी,
अब बताइए, डू यू रियलाइज हाउ टू पियर्स थ्रू दैट? क्या बताऊं, बताइए मुझे। चीजें होती है बताने वाली नहीं, वो ठीक करने वाली है जो, तो मैं क्या कहूँ। But can you see how easy it is? आप हैं तो सब कुछ इजी है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि क्षण भर के लिए वही पहुंच गए। It doesn't take time. मैं कहता हूं ना, मैं इसीलिए कहा, you need not worry, you can ask me a million questions and you have 1,000 doubts on me, but I don't have any doubt. I can do the same thing that you want to experience in a fraction of a second, and you cannot deny that because I didn't tell it, you are experiencing it. मतलब हरि भाई को ना कुछ याद आ गया। हरि भाई बोलता, why do I feel like the same thing that happened on that day is happening right now? So Hari bhai, I don't need you to sit in front of me in that small area, then only you'll experience. No. Can't you see that overflowing of energy within your heart? Again, do the same thing. You hold it, you just do like this and you are just like, say, is there any incompleteness in that space? Is there any fear? Is there any question in that space? तो क्या मंत्र पढ़े आप बताओ मुझे? This is enough. But yes, जो बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा। जो बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा, so that you don't become a lame, you become a master of it. ताकि आप कल जाके किसी को सिखा रहे हो ना, तो ऐसे सिखाओ, वो भी ऐसे जैसे आप कर रह गए ना हरि भाई जैसे, मतलब हरि भाई बस सही, अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज, ही इज ट्राइंग इट अगेन एंड एवरी टाइम ही इज फीलिंग द सेम थिंग। व्हाई? ऐसे नहीं होता है। साधना करो, इतने आसानी से होगा। तो सुधा जी, अब आपने मुझे पूछा था कि समाधि क्यों फेल होती है लोगों की, बिकॉज ऑफ द वे दे आर। आपकी नहीं होगी। हाँ, मैंने साथ में गुरुदेव ये भी तो पूछा था, हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आपने तो सीधा सीधा बता दिया, बस ये प्रिकॉशन ले लो, सामने पर्दा हट रहा है। तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा, डोर खोलो चले जाओ। एंड व्हाट इज दैट कनेक्टिविटी नाउ? Can you see, there is, you are not bound, but you are absolutely attached to something. मैंने क्या कहा? कृष्ण को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन बंधता है। उसी प्रकार से, did you realize that thing? You cannot be bound, but you are bound by the body. तो आप माया में हो कि महामाया में, बताओ। मुझे लगता है माया और महामाया के दोनों के बीच में हूँ मैं तो अभी। महामाया में तो पहुंची नहीं अभी, लेकिन माया से थोड़ा ऊपर फील हो रहा है, ये बात तो सही है। सुधा जी, अब भी ये मोमेंट में, ओके, इन दिस मोमेंट यू डू दैट वंस अगेन एंड क्लोज योर आईज एंड टेल मी इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन राइट नाउ। अब भी बोल रहा हूं। नहीं, वो तो गुरुदेव जब मैंने पहली बार किया तभी मैं कनेक्ट थी, लेकिन उतने डीपली कनेक्ट नहीं हो पाती, मुझे शायद ऐसा लगता है। जरूरत नहीं है मुझे डीप या ये से कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जब गैस के ऊपर, लाइक यू पुट ऑन समथिंग टू मेक टी, राइट? डू यू थिंक that pan should go inside the gas, then only it will? नहीं ना? नहीं। The fire is enough. At a certain distance also it can burn it. So if I reach that space or not, it is about
डू आई हैव दैट कनेक्शन, डू आई नो दैट पाथ। देखो सुधा जी, इससे इस छोटे से चीज में ना मैंने क्या बताया आपको जानते हो? मृत्यु के बाद भटकते हैं। मैंने मार्ग खोल के बताया आपको कि भटकोगे नहीं। द मोमेंट यू ओपन दिस, यू डायरेक्टली दे गो देयर। चलो, ये बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस करते हैं। नहीं, थैंक यू। मतलब आपने वो डाउट क्लियर कर दिया है। कैसे डोर खोल के अंदर ही तो जाना है और करना क्या है। हमको लगता है ना कि हमको कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना पड़ा क्या? हम यहीं हैं और अभी भी उसी के साथ जुड़े हुए। अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जस्ट कुछ लोगों को जो डाउट्स थे उसको बस हटाने के लिए पर्दा हटा के दिखा दिया कि भाई देख लो, यहाँ भी कुछ है, बस बंद कर दो अभी, फिर कम बैक टू माया, प्ले। बट अभी कभी लगेगा क्या? ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपको लगे कि यू आर डिस्कनेक्टेड। क्या करना है? हाथ ऐसे कर देना, ऐसा कर देना, एंड यू आर इन ट्रांस। वैसे मुझे वो उम्मीद है अब लगेगा नहीं, अगर आपने चाहा तो डिस्कनेक्टेड क्योंकि अब ऐसा कभी भी नहीं लगता कि मैं ऐसे कनेक्ट नहीं हूँ। कभी भी, मतलब दिन रात कहीं गए हो, कुछ भी, अब नहीं लगता कि डिस्कनेक्ट हूँ। तो लगता है वो हर समय मेरे साथ रहता है। थैंक यू। अब लाखों करोड़ों बार हाथ तो ऐसे किए होंगे। लेकिन ये सोच के कभी नहीं किया ना कि ये पर्दा हटा रहे हैं। यही काम होता है हमारा। हाँ, करते आप रोज हो, हम खाली पर्दा हटाने वाला टेक्निक बता देते हैं आपको बस। देन यू गेट दैट। आप खाली अंधेरे से निकाल देते हैं। लगता था हमें भी उजाला वो दिख रहा है, लेकिन हम वहाँ कैसे पहुंचे ये आप कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Sudha ji. Thank Aditi ji, you. please unmute yourself. हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव, मुझे कुछ अजीब सा सवाल है और मैं आई थिंक मैं मुझे पता नहीं क्या परफेक्ट वर्ड्स में बता पाऊंगी नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे तो आपके हिसाब से मुझे बता देना उसका अच्छा, आंसर। तो मतलब हरि भाई, अदिति जी ये बोलना चाहते हैं ये कि थोड़ा कंफ्यूज मैं कर भी रही थोड़ा हूँ। अजीब हूँ। उन्होंने कहा कि सवाल अजीब है और मैं समझ सकता हूँ, मतलब हम भी अजीब होंगे फिर। चलो कोई नहीं, पूछ लो। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है महादेव कि जैसे हमारा बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है या जिस कल्चर में हम लोग बड़े हुए हैं, ये उन लोगों का दोष नहीं है शायद। ये पता नहीं मुझे, पर अब जब से आपसे सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं, तब कई बार ऐसे लगता है कि अरे ये तो बचपन से सीखना चाहिए था। तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस ऐसे रॉन्ग नहीं, ऐसे गलत नहीं सोचते थे हम लोग, सही रास्ते पे पहले समय से ही होते तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि हम लोग ब्लाइंडली किसी के ऊपर विश्वास कर देते हैं, तो ये चीज हमको सिखाया जाता है। मीन्स एक it's unpredictable, Mahadev, means and it's ऐसी waste of time and फिर ये सब लोग जो एक्सपीरियंस्ड है, हमारे जो जनरेशन या फिर whoever टीचर्स, घर के बड़े लोग भी, तो ये लोग ऐसा क्यों नहीं बताया इन्होंने बचपन से कि डायरेक्टली ट्रस्ट गॉड, दैट्स इट, देयर इज नो और किसी पे विश्वास करना ही नहीं है जिंदगी में। शायद ऐसा किसी ने पढ़ाया होता तो नहीं, आई तो गलत हो एम जाता नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट था। ब्लेमिंग। आदित्य जी, तब भी गलत हो जाता था। तो आप अपने माता पिता के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे, आप अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे, आप अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे, आप अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे। देखो, किसी एक के वजह से मैं वो रिश्तों को तो दाग नहीं लगा सकता। For one person's fault, one person's error, I should not be putting everybody into that category, right? आपको याद है मैंने एक बार कहा था कि let's say you are traveling to a place and when you are going there, you landed in a new city and the moment you landed in the new city, somebody pickpocketed, आपका पर्स चोरी हो जाता है। वो पहली बार हुआ, आप दुखी हुए, अरे चोरी हो गया। दूसरी बार गए, दूसरी बार भी वही हुआ। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी वही हुआ। You know what you will tell about that place now? अरे वो चोरों का जगह है, जब भी जाओ पॉकेट मार लेते हैं। नो, इट इज नॉट अबाउट देम।
अगर आपका एक बार पॉकेट मारा गया है ना, तो आगे आप इतना सतर्क रहना चाहिए कि कोई ना मार सके। मैं तो कहता हूँ जैसे हरिभाई बोलते, पर्स ही मत लेके जाओ। So if you don't take, who will take it off? That's So right. But so हाँ, अगर किसी चीज में देखो, फिर क्या होता है ना, उसमें फिर आपको बांध दिया जाता है एक ही चीज में। बट until you know darkness, can you know light? Until you know sadness, can you know happiness? So these are all the mixture of things that run into the life. But what does it makes you? What does it make you? It is making you vice versa. learn yourself. Ki this is what also I can be. If I can be to that level of divinity, I can to be that level of heinousness also. मतलब सूरज ऊपर चमकता है लेकिन उसकी रोशनी नाले तक भी गिरती है. So can you see the same thing that is so blatant and bright can also be touching to the most heinous. But what do you choose to be? Do you choose to be that ray of light and stay in that darkness, in that drain, or you want to shine like that sun? So if somebody would have told you, no, this is the way, no, then you would have revolted. See, nobody wants to be pushed. Nobody wants to be pulled. आप सोचो, मैं अगर आपको खींचतान करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. But if you are given the freedom, that's where you live your life. So that freedom was given to you, and be thankful to God that, yeah, sometimes your heart breaks. So what? तो महादेव, एक बात बताओ कि निंदा सुनना भी एक पाप है, या हम लोग भी उसके भागीदार हो जाते हैं क्या फिर? अब एक आदमी फांसी लगा रहा है, आप उसे देख रहे हो, पाप है, पुण्य है? भागीदार हुए नहीं हुए? क्योंकि आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा, मैं इसे बचा सकता था. However, if you see the unfolding of the events, how true are they? That is happening now. That will not happen tomorrow. But I am still here. I will be there tomorrow. So truth is not what is happening. Truth is me. So what I am taking into me. क्या मैं उन सारे चीजों के साथ जुड़ के वैसा बन जा रहा हूं? No. So don't stop trusting because of only one person. No, that's not the way of life. It cannot be. So जिस तरीके से भी सिखाया है, उन लोगों को जितना आता था उन्होंने उतना सिखाया. So you should be thankful to them that at least they brought you to a space where at least now you are here. So you should be thankful for that. क्या कर सकते हो? दुनिया तो आपको कीचड़ फेंकेगी, तो क्या करोगे? पत्थर उठा के मारोगे, और क्या करोगे? उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? आप रास्ते पे जा रहे हो, नए कपड़े पहन के, गाड़ी आया पीछे से, दम करके जोर से चला गया, कीचड़ उछला आपके नए कपड़े के ऊपर, गाड़ी चला गया, आप क्या करोगे? गालियां दोगे? गाड़ी चला गया. परेशानी में कौन है? Who is in trouble? Who is in anger? Who is shouting? Who is irritated? कपड़ा खराब हुआ, I understand that. But if you sit there scolding that car vehicle, why did you do like this? जानबूझ के किया होगा, अनजाने में हो गया. So you keep on telling all the stories, you will be sitting there. Best thing, go back, change it. बदल के आ जाओ. Yes, at times it is not on the cloth, it is on the soul. But yes, the soul knows how to get rid of all these things anyways. वही मेरा नेक्स्ट सवाल था हमारे कि निर्गुण कैसे रह सकते हैं? हाउ टू प्रैक्टिस इट? How to practice it? You see, you cannot learn swimming without going into the water. So God has given all these opportunities for you to practice.
You should be thankful to God that such kind of people are there, those who are allowing to help you to actually realize that, oh, so how would you practice until you have that kind of people in your life? So you see, you have asked for that and God has given you that. You should be thankful. समझ में आया? You should be thankful for that also. And that makes you somebody different. That makes you something like, how is it possible to be like this? And then you become an example for others. क्योंकि वो कहते हैं ना, सूरज बनना है तो उसके जैसा जलना भी पड़ता है, और शिव बनोगे तो जहर पीना भी पड़ता है. So if you have chosen that, you should be going through that. It's nobody's doing, it's your own choice. So you have chosen that. Deal with it. Whatever is there in your hand, deal with it. नहीं है, बस छोड़ देना. Leave it. बाकी उसके हाथ में भी कुछ करने दो. Let him do something. Got it? So why they have not told you since childhood? Because Yeah, I'm not blaming them actually, Mahadev, but means there are पुराणों के इतने means रामायण whatever means all those we have, और उसमें इतना बताया गया है, तो उसको बाजू में रख के means why don't we follow it all? means कभी कभी ऐसे लगता है कि वो सब भूल रहे हैं हम लोग, means इनमें जो इतना है, या everybody should go through it, then only means खुद को लगने के बाद ही सब बात बताओ, समझ में आता है, ऐसा कुछ है. अगर आपके सामने कृष्ण आ जाए, ठीक है, कृष्ण अगर आपके सामने आ जाए तो आपका क्या होगा? What will happen to you? अच्छा ठीक है, कृष्ण समझ में नहीं आता. अच्छा, महादेव अगर सामने आ गए तो क्या होगा आपका? So happy. ना बस, मतलब सोच के ही हंस रहे हो तुम लोग. तो बताओ, क्या महादेव प्रजापति के सामने नहीं आए थे? फिर उसका क्या हुआ? So it is not about the situation in your life. It's about how you are dealing with it. रावण के सामने तो राम खड़ा हुआ था, फिर भी नहीं सुना. कृष्ण तो बचपन से खेलते रहे. कंस सुधरा क्या? और उसने पूरी ताकत भी दिखाई कि देख मेरे पास इतने सारे ताकत है, लेकिन कंस छोड़ा क्या? So that's how you learn. महाभारत में यू हैव ए चॉइस. मैंने कहा था ना कि महाभारत कहीं नहीं अभी हो रहा है. आप अगर आंख बंद करके बैठ रहे हो अंधे बन के तो धृतराष्ट्र हो, नहीं पट्टी बांध लिए तो गांधारी, नहीं प्रतिज्ञा ले लेते हो तो भीष्म, चक्र चलाते हो तो कृष्ण. इट्स अप टू यू. व्हाट डू यू वांट टू बिकम? किसी के कहने से आप वो अगर हो गए तो then what's your worth? So don't lose that part. So be thankful to everyone. कुछ लोगों को करेले पसंद है. क्या बोलोगे ये कैसा इंसान है, करेला क्यों खाता है? नो, राइट? उसको पसंद है भाई. So let him enjoy that. And then they say करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे लोग ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. अगर एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब श्रीनिधि जब छोटी हुई होगी, वो हमने कई बार देखा है ना, माँ के कोख में जब बच्चा रहता है तो लात मारता है. जब बच्चा माँ को कोख में रहते हुए लात मारता है, माँ कंप्लेन करती है या हंसती है? बताओ एक बार. हाउ डज इट फील टू ए मदर? आप लोग बोल सकते, हम नहीं बोल सकते. Very happy moment. वेरी हैप्पी ना? व्हाई? यू नो, ओह ही स्टिल अलाइव, इट्स किकिंग. Poor them. हमें भी वैसा ही लगता है. आप लोगों से ही सीखा हुआ है, कहीं और से नहीं. कि अगर बच्चा कभी लात मारे ना तो माँ को समझ जाना चाहिए बच्चा है, उसे फेंक दे ही देना चाहिए.
क्या किसी कभी सुना है कि अरे ये माँ बोलती अरे ये बच्चा बहुत लात मार रहा है पेट के अंदर, इसको निकालो जल्दी? ऐसा सुना है कभी? नहीं ना। वैसा है, नॉट इजी टू बी मदर. So you have to see something beyond, because nobody knows who you are. All they can do is only guess until they become you. बाकी कुछ कर्म हम भी चुन के लाए होंगे कि ये चीजें एक्सपीरियंस करना है, हम विल एक्सपीरियंस दैट. शरीर गिरना है, it will fall anyways, but do I fall? I don't. आप बताओ. Any further questions? ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? Not easy to be you, not easy to be any other person sitting in this room. सबके जीवन में कुछ ना कुछ है. क्या आपको लगता है कि आपका जीवन आसान है? कोई है यहाँ पे जिसको लगता है कि उसका जीवन आसान है? मुझे नहीं लगता. No one in this room. But you know what that craziness is among us? It is not easy, but it is worth it. क्योंकि मैं जीवन का परमार्थ ढूंढ रहा हूं. मेरे पुरुषार्थ के हिसाब से मैं अपना परमार्थ ढूंढ रहा हूं. Not just like anybody else, just like a crawling caterpillar. No. I am here just trying my best to realize myself. Despite all the drama going on in this world, in this life, we still say, let me find out what is beyond this. When all these things are trying to hold you down, your craziness is you are going beyond. And there is a saying, Aditi ji, na, when they all laughed at me, saying that I am different, I laugh at them, saying, seeing all of them are the same. तो दुनिया को देखो और देखो कैसी लीला करी है आपने. What kind of play you have played. ठीक है, चलो, थैंक यू. Thank you so much. हर हर महादेव. हर Har हर Har महादेव. Mahadev. Thank you, Aditi ji. Dhaval ji, please unmute yourself. प्रणाम धवल जी. Am I audible? Yes. Okay. I don't know whether to share the same or little bit of similar experience and to know why it's happening, and something which I don't want that is also happening. Okay. So, yesterday night also that one eye tears happened, and sometimes back, I think few weeks back, I was outside home and with our Rudraksh Mala, I was just chanting on a plain earth without any asana. While my eyes was closed and I was doing our routine chanting, that fierce shout which can feel like goes in entire Brahmand and calling Ma kind of couple of times. And as you have mentioned in your experience of that cremation ground, many a times I feel like that Ma's not Vigra but the presence.
And I think day before yesterday, I was talking to one gentleman outside my client place at a very late evening. Due to Okay. some circumstances, I had to wait, and I was talking to him in a very ordinary way, means normal talk, and then he said he was 78-year-old and doing job, and he said that the only prayer I wanted to do to Goddess is that when I leave my body, I leave it without taking help or even a glass of water from anyone or support from anyone. While he was saying that, literally, I had very wetty eyes straight away. I don't know why these kind of things is happen. Many times I drive on the car, and as you recently mentioned, in last, I think, few sessions also, you mentioned tear comes without any reason. So I don't understand. And at the same, this kind of state, and some another days, something happens which I feel like, why so different, change than this state, which is not acceptable. I really can't put that question clearly, but probably you know what I Okay. mean. So do you feel alone? That No, no? never. That's good. So things keep on happening in this world. Some things happen as you wished, you are happy. Some things don't happen in your way, so that they are preparing you to be happy sometime later. So what is that is bothering you? क्या है ऐसा? Some kind of act or behaviors, I feel like, as I think we discussed sometimes back also, that I decided some benchmark, and if it deviates, then I really don't feel like I'm So you don't fit into that frame of. yes. Okay. So you want to get out of that? Okay. Fine. So first and foremost thing is, you are very clear that you are not alone. No, I'm not. Not alone. So who is guiding you then? Who is walking along with you? Of course, In that case, in that case, whatever name you call it as my name, or you call it as the name of the divine, or whomever you believe in. If that higher energy is walking along with you, and things are still not happening. Let's say you have taken your daughter when she was a child to a mela. Okay. And she wanted to eat all the chocolates. First of all, she will go to a toffee shop, then she would go to that magic sugar candy, then she would jump into another candy shop, then another chocolate shop, then cool drinks and all those things. As a parent, do you give all that to her? You don't. But for her, let's say you experiencing that as your daughter, you will be sad. Why this was not given to me? Why that? But as a father, you know. But the troublesome thing that happens to all of us is, I am doing all the things good, then why these bad things? मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, I'm doing all that I can do. But why this is happening? Why things are getting adverse?
I'm trying my hard. I am a genuine person. I'm giving my best, but still results not showing up, right? एक कहानी बोलना चाहता हूँ, चलेगा? So a story. Once Krishna was going along with Uddhav. ठीक है, उद्धव के साथ कृष्ण जा रहे हैं. And they have gone into a far off distance and Krishna says that I'm thirsty, मुझे प्यास लगी है अभी, तो कहीं पानी का व्यवस्था करो. Then what happens? They come near a palace. एक बड़ा सा महल जैसा घर है. So they come in front of that. And when they come in front of that, Uddhav gets down and says and introduces that he's Krishna, Dwarkadhish hai wo, and we are traveling from this place and he is thirsty. So wo jo aadmi wahan ka tha, he was a rich person. He said he invited him inside and he said he gave him drink and also took good care of him. और जैसे ही वो निकल के आ रहे थे, then Krishna blessed him that may you be rich, may you be rich, may you be rich. And then they again started on their journey. And while going, after some time, Krishna again says, I'm thirsty. Ab Uddhav says, just a few moments ago, few minutes ago, you drank water and everything happened and now again you're thirsty. तो कृष्ण हंसते हैं, like he smiles and says, प्यास का क्या है, कभी भी लग सकता है. So I'm thirsty again. Now Uddhav says, where should I get something now? So finally what he sees is, there is a small little hut. एक छोटा सा कुड़िया है. And then Uddhav says, let me try if I can get something. But Krishna says, don't tell him who I am. He says, okay. Uddhav goes and says, we are travelers, so we are going through this and we are thirsty. So that person, by looking at them, they said, he invites him into that hut. He said, please come in. Although I don't have water, I have cow milk that I can give you. He gives the cow milk to them. Krishna drinks, thanks them, comes out. Standing in front of the house, he says, Teri gai mar jaye. Your cow should die. अब उद्धव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बोलता पहले वो आदमी सुनेगा तो पहले he will beat up us. So let us move this. He moves from that place and then he has, क्या माधव ये क्या लीला है तुम्हारी? बोले क्यों, क्या हुआ? ना उस इंसान ने पानी पिलाया, he just gave you water, और आपने उसे ब्लेस कर दिया, रिच हो, रिच 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 बोल के. और ये आदमी तुमको दूध पिलाता है अपने ये से ऊपर जाके. He didn't had that kind of thing, but he might be hungry tonight because he fed all the milk that he had. और आप उसे कहते हैं तेरी गाय मर जाए. What is this? तो कृष्ण कहते हैं इसमें बुरा क्या है? What is wrong in it? Now tell me what is wrong in it. Dhavalji, what is wrong in it? If Krishna said that. Wrong in the eyes of a normal human being. जब उद्धव पूछते हैं कि क्या हुआ फिर, why did you do that? तो उन्होंने कहा कि देख, उसने एक प्यासे की प्यास बुझाई. Like he gave water to someone who was thirsty. So I blessed him. कि तेरे घर में धन धान्य भरा रहे. But when I went to this house of this person, he gave more than what he can afford. और उसने वो दूध पिला के उसका जो पिछला जो भी उसके ऋण थे ना, उसने खत्म कर दिया. और अब उसकी मृत्यु का समय आ गया है और वो मृत्यु प्राप्त होगा. क्यों? क्योंकि सारे कर्म कट गए, अब उसको मोक्ष प्राप्त होगा. और अगर इसको मोक्ष प्राप्त हो गया, वो गाय अगर रह गया तो उसका देखभाल कौन करेगा? और दूसरा, वो गाय भी अपने 84 लाख योनि जो है वो क्रॉस कर चुका है, अब उसको इंसान के शरीर मिलने का समय आ चुका है. So what did I do wrong? What looks a terrible thing at the minutest of the things, but at a major thing? एक छोटे से चीज में हमको लगता है कि अरे कृष्ण ऐसा क्यों बोले, वो मर जाए बोल के. But can you see that
and we are trying to judge him with this minute mindset. हमारी क्षुद्र बुद्धि से उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं. So what do you do in this case? You don't do anything. You just fold your hands and say, if you are making me go through this, at least tell me why you are doing this. Because I don't know why this is happening. That's why I am worried. इस चीज का उत्तर कैसे मिलेगा, इसके लिए एक रहस्य बताना चाहता हूं. प्रयोग करके देखना, सारे लोगों के लिए है. Every one of you. I don't know. बता तो दूंगा, करो ना करो आपके ऊपर है. एक देवी है, स्वप्नेश्वरी. ठीक है. When will you invoke this goddess? How to invoke this goddess? इसका कारण एक ही जगह पे मैं आपको बता देना चाहता हूं. Invoking of this goddess can be done when you are doing all the good things. आप अपने सही मार्ग में जा रहे हो, आप धर्म के साथ चल रहे हो. You are doing your best, you are trying your best, but things are not happening the way you want it to be. So why are you worried? As I said, because you don't know the completeness of that. आपको उसका संपूर्णता पता नहीं है, इसलिए आप दुखी हो. अगर आप मुझे बताओ कि ये सारे चीजों के बाद कल सुबह जब आप जाओगे तो आपको एक बड़ा सा कुछ धन मिल जाएगा, will you be worried about this now? No, you are worried because you don't have a 10 rupee note in your pocket right now. But if tomorrow morning I'm going to get that, I won't be worried. तो इस चीजों के लिए कभी भी आपको कभी भी ऐसी तकलीफें आए, don't make it a habit. हाँ, when that pain is genuine, when that quest is genuine, तब इसको इस्तेमाल करना है. Shall I? Don't misuse it. Okay? Misuse करोगे तो खो जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा ये. It will just be a random thing for you again. And don't take it lightly because it is not just imagination part. Okay? ये जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हो ना कि why things are not happening in the right way, किसी के साथ भी हो सकता है. सबके साथ हुआ है ना कभी ना कभी. So you do one thing. Today, when you go to sleep, ठीक है, हाथ जोड़ लेना और सिर्फ याद करना इस नाम को, स्वप्नेश्वरी देवी. मतलब जो स्वप्न की देवी है, मतलब स्वप्न की जो अधिष्ठात्री देवी है, स्वप्नेश्वरी देवी. क्या करना है उसमें? You invoke her in your own way. कोई मंत्र नहीं देने वाला. You just remember her and put on the question in a very simple way. अगर चाहो तो लिख दो उसे कि आपके अंदर जो सवाल चल रहा है उसको एक ही लाइन में लिख दो. And from this day until you get the answer, you will repeat the same question before going to sleep. सोने से पहले इसको बोलते बोलते, मतलब the same question should repeat in your head. And mind it, this is not going to be an answer of the world. आप ये करके देखो. And because I am saying so, it will happen. You go and do it. Within a few days, हो सकता है एक दिन में भी हो जाए. I don't give a break to that anyways. If you keep on doing that, you will be amazed by the answer that you get, because you will be able to classify that this is not an answer coming from your head. This is not an answer coming from this world. That would be sheer wisdom, and that moment might be a moment of your life-defining process. It's as if like she's standing in front of you and saying, and laughing and saying, "तू नहीं समझ पा रहा ये बात को, this is what it is." Now go try, experiment with that. But as I say, the question should be genuine. And your question should not be changed. The question should be remained one. इसीलिए लिख दो उसे, आज कल परसों डेली सोने से पहले वही सवाल, जब तक वो उत्तर नहीं देती. और ऐसा हो नहीं सकता धवल जी कि मैं बोलूं और वो उत्तर ना दे.
So go experience and then let me know what happened. And that teary eyes that you had might bring a big smile on your face as well after you experience it. ठीक है? So अभी के लिए मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ. I'm just saying that you do this. On my saying you do this. सिद्धि करना है तो उसका अलग प्रक्रिया है. सिद्धि करने की जरूरत नहीं है. मैंने बोला है तो होगा. So you just do this. Okay? Thank you. Thank you, Dhavalji. Thank you very much. Kamlenderji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। हम्म. गुरुदेव, शिवरात्रि के दिन वो रह गया था हमारा नमामि शमीशान, उसका आप कुछ व्याख्या करने वाले थे उस दिन। Okay. शिव रुद्राष्टकम का। तो उसको ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, समय भी हो रहा है, लेकिन एक सेशन कर लेंगे उसके ऊपर फिर कमलेंद्र जी। जी। क्योंकि वो मैं ऐसे नॉर्मली बोलना नहीं चाहता उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Because if it should come from us, it should come in that way that people remember what was said. बिल्कुल बिल्कुल। So we'll come back for that. ठीक। अगर कोई दूसरा कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लें। हाँ, एक प्रश्न ये है, जैसे वो है ना नचिकेता की स्टोरी जो है, उसमें वो यम के द्वार पे जाता है। तो यहाँ पे यम मीन्स एक्चुअल यम जिसको हम मानते हैं वो है, या कुछ और भी मीनिंग आता है इसमें यम का? नहीं, इस मांडुक्य उपनिषद है ना ये शायद मांडुक में नहीं है सर, ये उसमें है, कोई के से स्टार्ट होता है, वो सेपरेट है। कथोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद में। कथोपनिषद का, अच्छा इसका हाँ। नहीं है ना? ओके, अच्छा ये कठोपनिषद का है ये। हाँ। सो नो, यहाँ पे जिस यम का बात किया जा रहा है वो यम का ही बात किया जा रहा है, यहाँ कोई दूसरा ये नहीं है, मतलब उसका कोई रहस्यमय चीज नहीं है इसमें। ओके। सवाल ये आता है कि वो पहुंचा कैसे वहां पे। हाँ, मैं मतलब वही how was it possible to even for him to reach to that space? Yes, and with body. With a body. So in such case क्या हुआ था ना कि he, आप जानते हो ना वो कहानी, अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि his father was giving away all the old cows to the Brahmins. And he said, then whom are you going to give me? He said, I give you to Yama. मतलब पिता अपने बेटे को कहता है मैं तुम्हें यम को देता हूँ। So he said, okay, if you give me to Yama, then I should go. क्योंकि वो ऋषि का बात था, मतलब he was a sage, और उसका जो बात है, like he said it, so it should happen. जैसे मैंने अभी कहा ना इनको, अभी धवल जी को बोल रहा था ना कि if I have said that it should happen, that's how it is. कि उन्होंने कहा and he has to go. Now he was also not a normal person. वो भी योग जन्मा है। Okay. So he started doing his sadhana, and in his sadhana, he started traveling. Now, who gave him the way to Yampuri? So that means he must have a history behind him, which he knows. But all this, ये क्या है? पुराणों के अंतर्गत आता है, उपनिषदों के अंदर आता है। ये उपनिषदों के जितने भी कहानियां हैं ना, these are very, very enriching stories. एक चीज आप देखे कि लाइक एक शरीर के साथ भी वहां तक पहुंच सकता है। एक तो एक चीज रहस्य क्या बोला गया कि इट इज पॉसिबल फॉर यू टू इवन गो विद द बॉडी। जो कहते हैं ना बॉडी छूट जाएगा, इसके दो जगह पे और भी व्याख्या हुए हैं। जैसे युधिष्ठिर पहुंचे हैं, शरीर के साथ गए हैं। ध्रुव जो है अपने लोक में जो है वो शरीर के साथ गए हैं। So that means there is also a possibility to sustain this body and still be there. एक दूसरा, the way he traveled, अष्टांग योग में क्या क्या स्टेप्स है? यम, नियम, फर्स्ट वर्ड आसन, क्या है?
फर्स्ट वर्ड क्या है? यम। सो उसने क्या किया, किससे मिला जाके वो? ओके। सो वो जब व्हेन यू ब्रिंग दैट क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी इन यू, ओके। देन यू कैन रीच टू दैट स्पेसेस। तो वो उतना स्थिर हो चुका था। हम्म। ही हैड अल्टीमेटली वन गोल इन इट्स लाइफ कि अगर मुझे उनको सौंपा गया है, सो आई विल गो देयर एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट इट इज। और वो जाके कैसे, he asked everything about the secrets, and then Absolutely. you remember what he asks to Yama. Yam पूछते हैं कि अच्छा तू इतना अच्छा है, and you know like he waited for Yama for 3 days. तो Yam Yes. कहते तू मेरे लिए 3 दिन इंतजार कर रहा था, so you ask 3 boons from me. तो इसने क्या कहा था कि अगर वरदान देना है तो ऐसे दें कि मैं अपने पोते को एक बड़े से महल में बिठा के खाना खिला रहा हूँ। मतलब he asked that he will be living and he will be feeding his grandson in a big house. Means everything is asked in that one way. तो यम हंसते हैं। मैं सोच रहा हूँ कभी कभी ये सारे चीजों को लेके आए क्या, मीन्स एक उपनिषद के जो भी व्याख्याएं हैं बहुत ब्यूटीफुल है, दोस्त थिंग्स आर लाइक, और काफी मीनिंग्स निकल के आते हैं उसमें गुरुदेव, मतलब बियॉन्ड ऑल दैट थिंग। सारे चीजें ऐसे ही नहीं है, बट इफ यू एंटर इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जैसे बोलते हैं ना नदी तो ऊपर से देखो पूरा पानी समान दिखता है, लाइक इट लुक्स लाइक इट्स लाइक ए फ्लैट लैंड, बिल्कुल बिल्कुल, पता है उसी को चलता है जो पानी में उतरता है। So all these things look like okay something has been written. No, the person who enters into it, तब उसकी गहराई पता चलती है। बट आप पढ़ना शुरू किया? हाँ, मैं मंडूक भी शुरू किया है, 12 श्लोक तो एक बार ही देख लिया उसमें, मतलब अब उसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे मैं वो भी कभी जाता हूँ, भागवत सुनने जाता हूँ जब भी, हर साल, तो ऐसा ही लगता है कि ये सारे सेशंस हमारे जो चल रहे हैं उसमें बिट्स एंड पीसेस में सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है हम लोगों को। So all that you are seeking is already in your realization. All that you are finding is a proof of that. So अभी आगे चल के जो भी हो रहा है ना आप लोगों के साथ, so that's what you will get a proof that अच्छा, so that means what I was going through or what was being told is not a state of blasphemy. मतलब ऐसे उड़ाने वाली बातें नहीं है ये, इसी सारे चीजों का वर्णन कहीं ना कहीं है, और वो आज के लिखे हुए नहीं है। तो है। So what creates that? That creates another kind of energy within you. Like आपको इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप बोलते हो आई एम ऑन द राइट पाथ। That should go on. उसमें बस गुरुदेव यही चीज कई बार क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे मेरे को यम का वो आया, ये इस तरीके के कंफ्यूजन आते हैं कि क्या इसके शब्दार्थ और भी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। वहीं पे आके, क्योंकि हम लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते इसमें, कभी कई जगह ऐसा होता है कि भाई लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते उसका। और एक यम का मीनिंग क्या होता है? समय। और उसी शब्द से आता है संयम, संयम। लेकिन जब एक क्षण को भी यम कहा जाता है, दैट इज टाइम, द व्हाट यू कॉल इट एज फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, वो भी यम कहा जाता है। सो व्हेन यू गो इनटू दैट डेप्थ ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अगर एक वर्ड भी लेके बैठे ना, उसकी व्याख्या करते करते आप और कहीं पहुंच जाओगे, बट अल्टीमेटली ऑल दैट विल टेक यू टू ओनली वन प्लेस, यू। आप कितना भी घूमो, एवरीथिंग विल रिटर्न बैक टू यू ओनली। सो इट इज गुड दैट यू हैव स्टार्टेड रीडिंग दैट। किसी दिन आपको बोलेंगे आप पढ़ लेना और थोड़ा समझा देना सबको क्या पढ़े और क्या समझ में आया। मैंने कहा था ना सबसे छोटा है, 12 ही है। हाँ, इसमें 12 ही श्लोक है, लेकिन वो 12 श्लोक तो है, लेकिन एक एक श्लोक मतलब लाइक इट इज लाइक ए महावाक्य, पूरा पूरा निचोड़ है उसमें, लाइक इट इज जस्ट लाइक द जूस ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यस। तो हम आपको बड़े से छोटे की तरफ लेके आ रहे हैं सर।
Chalo. So Kamlendra ji, anything else? No, thank you. Thank you. Thank you, Kamlendra ji. So there were few more hands, but I think either they got their answers or they have given me that okay, he has talked too much today, so let him be at rest. So if there are no more questions, we will close it here with just a beautiful story that Haribhai, today somebody shared in that group, right? You remember that little boy traveling in train? That story has been coming up for me for the past few years now. So it reminded me again. And I think like it's a good time to tell that story. बहुत सुंदर कहानी है. So now all this time when धवल जी शायद आपके लिए ये भी एक उत्तर आएगा. And not only for him, all the people that we are here right now, for all of us, that would be assurance kind of thing. Today only somebody shared in another group. It came as a video, but beautiful one. There was this a family and they have a small little boy. They always used to go to their parents' house and grandparents' house during the summer vacation and all those things. So every year that was the thing. And that small little kid used to love it, just like all of us. During summer when we used to travel into the villages. So that was the time of, although there were no mobile phones, there were no gadgets, we still had mango trees. We didn't have the best of the comforts, but we have rope cots. We didn't have the steam jacuzzi, but we had the ponds. So that was the way it was. And I used to see, like, when I used to travel, there was no light in that village in the night, but all that I can see is the fireflies lighting up everything. That looks magical. So that this small kid, every year he used to travel to his grandparents' house and he used to love that place. And slowly that kid grew up year by year. And one fine time he said, because his parents had some other work, the kid said, this time I'm going to go alone. I don't need you to come along with me. आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले चले जाऊंगा. And then the parents said, no, how can you go? We will make some arrangements. We will go with you. Just hold on for now. But he was adamant. He said, no. I'm good enough now. I'm grown up. I can go. All that you have to do is do a ticket, get me to the train. I will get down there and they will pick me up anyways. So after a lot of coercing, nothing happened. The kid said, no, I have to go. So the father did. He said, okay, fine. And he gave him a instructions that these are the things you should follow while going into the train. ये सारे चीजों का ध्यान रखना तो. And the father goes on the date of travel. The father takes him to the train, railway station, makes him sit at his seat, the confirmed seat that he had, that small little kid. And he gave him again the instructions that do this, do that, and all those things. And before going, he also met him outside the window and he was saying, please take care and don't take food from anyone and all those things. And then finally what he did is he gave a letter in the hand of the kid. एक लिफाफा देता है बच्चे के हाथ में. ये कहता है कि you are going right now, but if any time something wrong is happening, then you can open this letter. Up until then you should not. The kid says, okay, fine. He folded it, kept it in his pocket. Train started. Father bid goodbye. The train started. The kid was enjoying his first adventure in this world, going alone. All the new people coming, going, and he was so happy. Soon enough, it was evening and night. Then a terrifying guy enters into the train and just sits there and looks at him as if he's going to harm him. And now the kid is fettered. Like the kid is thinking like, oh my God, what is going to happen now? Why is he looking at me like this? He was fearful. He was so fearful that he was not able to sleep because that person was looking at him constantly. Like, why this small little kid is traveling alone? And this kid was thinking like he can do me harm.
And that very moment, he realized one thing, the letter of his father. And in that moment, when he was thinking of this, like he was fearful in his heart, and then he was thinking like about the letter of the father, he brings out that letter. And he brings out that and reads it. And you know what is written in that? You should be knowing it. It is written, my son, don't fear. I am in the next compartment. So anytime you feel fearful, come to me. I'm just sitting in the next compartment. So I believe like that God has also given us that letter within our hearts. It's not on a paper, it's on our soul. It's not there out there anywhere, it's all within us. And the time you get fearful, all time you think like things are not happening the way it should be. When you see outside the world and the world looks ugly, you are that small little kid. You don't think like your father has abandoned you. The God has not thrown you away. He's still waiting for you in the next compartment. He has always been traveling with you. So when you are fearful, what do? You just close your eyes, look into your heart, and you will find that letter. Don't worry, my child. I'm just by your side. And I believe if we can take this story as a life story for us, क्या होगा धवल जी? Exactly like that. जैसे उस बच्चे के चेहरे पे रौनक आ गई ना, वैसे ही आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी. अचानक से सारा डर छूट जाएगा, अचानक से सारी पीड़ाएं कट जाएंगी, अचानक से, like in that fraction of a second everything will change. And I believe you should feel that. That's your faith, that's your belief. Somebody asked me like, what's your faith and what's your belief? I said, my breath. My faith is that if I leave this breath, it will come back. My belief is that once the breath is coming inside, I will be alive. So my faith and belief are going at the same time. And every breath of mine is running on faith and belief. And what else can make me fearful of? So may the story ring in your ears for years to come. And may you all remember this story whenever you feel alone, whenever you feel shattered, whenever you feel no one is there, whenever you feel somebody is trying to harm you. Remember, he has not left you. Trust in it. And that is something beyond. And that is something which will take you, surpass, overcome all these troubles, turbulences of this world. That faith, that belief. And if you still have a doubt, do one thing. I will write a letter and send it to your homes. And then you keep it in your pocket. And whenever you are fearful, open that and bring it out and read, oh, I am in that next compartment. Be happy. What's the problem? If that is what is required, let's do that. And Haribhai is good at designing. Anyways, he will design an amazing one. And I'll do a signature under that. Okay, take it. Nahi, Rajan ji, wo bhi acha hi hoga na. So Haribhai, the next time all the people come, please make sure everybody gets an envelope. And in that, we should write something like that. Don't worry, my child. I'm just around. You are not alone. So with these beautiful things in our heart and the prayer for the world. Oh, Chandra Prakash ji. Sorry, bhai, ye naye bacche ka. Yeah, Chandra Prakash ji, please unmute yourself. He has come. He has come for the first time, I think. Right, Chandra Prakash ji? जी. बोलिए. Hello. Are you there? Hello. हाँ, बोलिए.
हाँ, अभी जो आपने स्टोरी बोला ना, उस स्टोरी से रिलेटेड मेरे नेक्स्ट पता है क्या हो रहा है। मेरी बेटी को 3-4 दिन से कुछ उसको डरावने सपने आ रहे हैं। वो ओके डर रही है सोने को, तो रात के टाइम पे क्या है, वो पलंग पे सोते तो मैं उसको लेके मेरे मेरे बाजू में सुला ओके। लेता हूँ। तो वो बोल रहे कुछ भूत दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है बोल के डरती है। तो अच्छा। बीच में मैंने महाकाल जी को पूछा था। हाँ तो उन्होंने एक बात बोला था कि जो हम खाना खाते हैं, चावल उसको पेपर में डाल के उसके तकिए के नीचे रखना, सुबह किसी एग्जाम में तो खिला देना उसको। वो करूँ या कुछ दूसरा कुछ प्रोसेस देंगे इसके लिए, क्या करना? ये चंद्रप्रकाश जी, कुछ करने की जरूरत नहीं। बटुक भैरव का फोटो उसके सर के पास रख दो, उसको बोलो नमस्कार करके सो जाए, देखते कौन आता है। इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब वो जो पलंग पे सोते पलंग पे रख सकते हैं क्या हाँ, फोटो? उसके सर के पास रख लो एक बटुक भैरव का फोटो, उसको बोलो आज के बाद ये देख लेगा। ओके। और देखते हैं कि कैसे सपने आते हैं उसको। और ऐसा ना हो जाए कि वो बटुक भैरव के साथ खेलने लगे सपने में। ओके, आज ही कर लो, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, श्योर श्योर। अगर कोई डाउट है तो राजेश जी से कांटेक्ट कर लेना, वो बता देंगे आपको। ओके। ठीक है। जी जी, अगर धन्यवाद। बच्चे हैं कभी कभी डर जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस हेल्प देम वो विद दैट। स्कूल में क्या है, वो टीचर्स उनको हॉरर स्टोरीज बोल रहे थे, तो दिमाग में उनको वही चलता है, रात में वही दिमाग में बोल रहा है, क्या बोलूं। अब मैं बोला कल लेटर लिख के दूंगा टीचर को, स्टोरीज मत सुनो, बच्चे बच्चे डर रहे स्कूल में, क्या बोलूं। अरे बाप रे, टीचर भी हॉरर स्टोरी सुना रहे स्कूल में भाई। एक बार उनके अपने इवेंट में सेशन में लगा के आपसे वो एक बार करवाएंगे सेशन। नो लेवल प्रॉब्लम, स्टोरी ये बोलेंगे। इतना ही खाली उसको कर दो। उसको बोलो कि थोड़ा उसके सर के पास रख दो, उसको बोलो भाई एक बार नमस्कार करके सो जा, बोल दे क्या प्रॉब्लम है तेरे को, और बोल दे देख लेने के लिए, ही विल सी, डोंट वरी। कल सुबह ही वो आपको बोल देगी क्या हुआ। जी जी जी, ठीक है, श्योर चलिए, श्योर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। बटू भैरव तो आजकल ही इज डूइंग एवरीथिंग, कपड़ों का इस्त्री भी कर ले रहा है, खाना भी मंगा ले रहा है, स्विगी पे डिलीवर भी कर दे रहा है। मतलब लोगों का कुछ भी काम नहीं है, फोन वही कर देते हैं, मतलब बटू भैरव करा दे। लोगों का टिकट नहीं है तो बोले बटू भैरव टिकट करा दे। आई थिंक बेचारा क्या क्या कर रहा है। He should be coming running towards me. Why? Where have you sent me? Chalo, thank you everyone for being here. Thank you for your time and your let me see what is coming up this Sunday, because most probably after that for 2 Sundays I will not be available. One Wednesday, it's 2 Sundays, one Wednesday I will not be available. Navratra aa rahe hain kaise bhi, so I will try my best to at least give you some processes that you can do on your own. तो वो बता दूंगा। और मैं देखता हूँ अगर बिकॉज दिस 20th विच इज शिवरात्रि इज फॉलिंग ऑन द सेम डे, एंड उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, लेकिन इट इज ओनली अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया, सो इन इंडिया इट इज नॉट विजिबल। एंड एट द सेम टाइम दिस डे ऑल्सो, शिवरात्रि के दिन, लाइक इट इज द मैक्सिमम सिमिलर डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन के बीच में ऐसा डिस्टेंस है कि डे एंड नाइट आर ऑल्सो इक्वल ऑन दैट डे, सो इट इज अ गुड डे। सो आई विल सी what can be given। और जो दारिद्र्य ध्वंस का जो प्रोसेस बोलने वाला था, लेट मी सी इफ दैट डे इज कंड्यूसिव। अगर वो दिन सही है शुरुआत करने के लिए तो संडे बता दे, तो आप मंडे की तरफ कर सकते हो कैसे भी। आई विल जस्ट चेक दैट एंड लेट मी सी। अगर उसमें कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले आइदर टुवर्ड सैटरडे आई विल पोस्ट इट, ओके। बट आई विल सी लाइक इफ इट इज अ गुड डे टू स्टार्ट। If not, then we will see for some other day. But I will give you some other process anyways. नवरात्र के लिए तो प्रोसेस दे ही दूंगा आपको, ठीक है। और स्पेशली पीपल जिनको लगता है कि उनके ऊपर वशीकरण हुआ है, लाइक समथिंग हैज बीन फेड टू यू, और कुछ किया गया है आपको, उनके लिए भी एक छोटा सा प्रोसेस बता दूंगा। यू नीड नॉट गो एनीवेयर, यू कैन हील योर ओन सेल्फ। कितना भी बड़ा वशीकरण हो वो टूट जाएगा, ओके, यू विल ब्रेक इट। So I'll give you that process also, and let's see. And if there is anything specific that you want to deal with, आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, so give a message in the group. We will bring that up. Okay. So thank you everyone.
Thank you for your time. Thank you for being here. Till we meet again, Aham Brahmasmi. And remember that letter. And as you folded your hand, remember the process.